Hi guys, ready for the next one then? The next one we're going to do is concave preferences. So we've been reiterating the steps for finding the equilibrium. Let me reiterate them one more time. आप कोई भी यूटिलिटी फंक्शन देखते हो, the first thing you do is you draw a rough sketch. When you draw a rough sketch, you figure out कि उसका potential equilibrium कहाँ पे है. उसका पोटेंशियल इक्विलिब्रियम कहाँ पे, ये फिगर आउट करने के बाद आप उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालते हो. अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो अगर आप सीधा एमआरएस कंडीशन पे पहुंच जाओगे विदाउट डूइंग एवरीथिंग लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आंसर निकलेगा नहीं. कॉनकेव कर्व में क्या निकलेगा? इट विल बी द रॉन्ग आंसर. सो आप एमआरएस कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो. आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्रॉ रफ स्केच, फिगर आउट तो पोटेंशियली इक्विलिब्रियम कहाँ पे है. इंटीरियर में है तो आपका किंक है या टेंजेंसी कंडीशन है. कॉर्नर में है तो कॉर्नर कंडीशन लगाओगे and that will be your equilibrium condition. So when you take a curve like x1 square plus x2 square, हमारे पास जो लिस्ट है हम उसमें से फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि ये कर्व हमारा हो कौन सा सकता है. इज इट अ कॉफ-डगलस? No, because this is not of the form u is equal to x1c x2d का फॉर्म नहीं है ना, मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस है, तो कॉफ-डगलस नहीं है. Is it a perfect substitute? Perfect substitute is a combination of a linear plus a linear. This is a non-linear plus a non-linear, so it's not a perfect substitute. Is it a perfect complement? Perfect complement is minimum of x1c x2d. No. ax1 comma bx2. Linear comma linear. Perfect complement भी नहीं है ना. Is it a kink function? No. Min function नहीं है तो kink function तो हो ही नहीं सकता. Is it a quasi-linear? Again no, because quasi-linear is a linear plus a non-linear, which it is not. तो आपको पता लगा कि ये कोई भी functions जो आपने study कर रहे हैं उसमें से नहीं है. Which means you figure that u is equal to x1 square plus x2 square is a new function. Now chances are कि आपको इसकी shape का पता हो, chances are कि आपको इसकी shape का ना पता हो. I'm going to take it as a fact कि आपको इसकी shape का नहीं पता. We, by looking at the function, do not know the shape of the IC. By looking at the function, we do not know the shape of the IC. Then what do? I still try to figure it out. सबसे पहले the first thing to figure it out is कि आपका जो curve है उसका negative slope है कि उसका positive slope है. Which means that I need to figure out whether it's a good combination, bad combination, or a good bad or a bad good combination. क्योंकि अगर good combination है तब negative slope है, bad combination है तब भी नेगेटिव स्लोप है, गुड बैड या बैड गुड का कॉम्बिनेशन है तो पॉजिटिव स्लोप है. सो इसके अंदर व्हेन आई इंक्रीज x1 u increases, which means that x1 is a good. When I increase x2, utility again increases, which implies that x2 is also good, which means it's a good combination. If it's a good combination, अगर मैं x1 को increase करूंगी तो मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी. बट आईसी बनाने के लिए मुझे इंडिफरेंस चाहिए. इंडिफरेंस के लिए मुझे यूटिलिटी को कांस्टेंट करना है. यूटिलिटी को कांस्टेंट करने के लिए मुझे यूटिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम गुड टू, सॉरी कम करना पड़ेगा फ्रॉम गुड टू, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रही है ना तो कम करना पड़ेगा. वो कब होगा? जब x2 को हम कॉल कराएंगे क्योंकि x2 भी गुड है, right? Which means the first thing we have figured for u is equal to x1 square plus x2 square, that it is a good combination, which means it has a negative slope. Now negative slope के अंदर हमें पता है कि तीन तरह के slope होते हैं: diminishing, constant and increasing. अगर diminishing होगी तो curve convex होगा, constant होगी तो curve straight line होगा, increasing होगी तो curve concave होगा. Let's figure that. Let's find out MRS. MRS is nothing but mu1 upon mu2, which is 2x1 upon 2x2. 2 gets cancelled. It is x1 upon x2.
हम हमेशा डाउन द कर्व जाते हैं फ्रॉम A to B to figure out our MRS. When I go from A to B, x1 is rising, x2 is falling, numerator is rising, denominator is falling, which means my whole MRS is increasing, which means I have an increasing MRS. If I have an increasing MRS, that means my IC curve is a concave curve. So हमने यहाँ पे लिखा था ना, draw a rough sketch. ये वाला task हमारा पूरा हुआ. We have drawn a rough sketch and we have figured it's a concave curve. Second step, figure out a potential equilibrium. How do I figure out I'm doing now step 2. Figure out a potential equilibrium. How do I do that? How do I figure out the potential equilibrium? उसके लिए I will draw a budget line. ये मेरी budget line है A, B. Random बना रही हूँ, कोई मैंने इसका actually curve नहीं लिया है अभी. अब इसके ऊपर मैं अपने बनाती हूँ ICs. ये मेरे ICs हैं, concave हैं. तो मेरा equilibrium E0 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है. तो मैं किस पे अपना equilibrium लेना चाहूँगी? E0 पे कि 1 पे कि 2 पे? E0 पे तो definitely नहीं लेना चाहूँगी because E0 is on a lower IC. So when I know I can afford a higher IC, why would I then want to take it on a lower IC? I wouldn't want to, na? Which means that E0 is definitely not an equilibrium. Then what can be the equilibrium? Either 1 or 2 can be our equilibrium. अब 1 होगा या 2 होगा वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा कॉर्नर कंडीशन से. So अब क्या हुआ? मैंने अपना स्टेप 1 पूरा किया, मैंने अपना स्टेप 2 पूरा किया. स्टेप 3 इज इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो ये हमारे पास फंक्शन है. लेट्स सी, u is equal to x1 square plus x2 square. Let's say subject to 2x1 plus x2 is equal to 100. हमें पता है कि ये वाला कर्व कौन सा है? कॉन्केव. हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया. इसका मतलब इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ है? कॉर्नर पे. सो कॉर्नर के मेरे पास क्या तरीके हैं? या तो डायग्राम बनाऊंगी या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करूंगी. ठीक है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते हैं. अगर मैं ऑन दी एक्स एक्सिस कंज्यूम करती हूँ, मतलब मैं पॉइंट ए पे कंज्यूम करती हूँ, तब मैं x1 कंज्यूम करूंगी सिर्फ 50 यूनिट्स और x2 कंज्यूम करूंगी 0 यूनिट्स. तो यूटिलिटी मेरी कितनी होगी? 50 स्क्वायर. अगर मैं y एक्सिस पे कंज्यूम करती हूँ, मतलब मैं b पॉइंट पे कंज्यूम करती हूँ, नहीं सॉरी, ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है. बजट लाइन ऐसे बनती है ना, a b. तब मैं कितना कंज्यूम करूंगी? x1 0 और x2 विल बी 100. इसको हमने यूटिलिटी फंक्शन में डाला तो हमारे पास क्या आया? 100 स्क्वायर. ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ऑब्वियसली ये ज्यादा है. सो द कंजम्पशन will be where? Will be on y axis. My point of consumption will be 0, 100. और यही चीज अब मैं diagrammatically भी कर सकती हूँ. You see, diagrammatically there are higher chances of you going wrong. That is why I always prefer numerically. But let's see diagrammatically. Diagrammatically we have 2x1 plus x2 is equal to 100. 2x1 plus x2 is equal to 100, right? Which means that my budget line is this. A, B, this is 50 and this is 100. ठीक है. अब x1 square plus x2 square, we are given u to be equal to x1 square plus x2 square. Now to be able to understand better, let's change the color. Let's take potential points. अगर 50 है, 0 है, तो मेरे पास यूटिलिटी क्या है? 50 स्क्वायर. 50 स्क्वायर की मुझे यूटिलिटी और कहाँ से मिलेगी? 0, 50 से, which is here. So this point 0, 50 and 50, 0 are lying on the same IC, which means this is my IC, this is my IC, and so on and so forth. Which means that obviously ये वाला point on a lower IC है ना, this point is on a higher IC, so this point is my equilibrium. But you see, it was easier to draw it क्योंकि आपको ये चीज़ पता थी. अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होती तो शायद आप इसको इतने अच्छे तरीके से draw नहीं कर पाते. Which is why this method always works better. That you draw a rough sketch, then you figure out a potential equilibrium and उसके basis पे आप अपनी equilibrium condition लगा के answer निकालो. Let's do one more. Let's do one more concave. So u is equal to, let's say, 2x1 square plus x2 square.
subject to x1, 5x1 plus 5x2 is equal to 100. Then step 1, it's a concave curve. If it's a concave curve, we have a corner solution. For a corner solution, either the solution is on x-axis or the y-axis. अगर x-axis पे है, तब हम क्या consume करेंगे? x1 will be 20, 100/5. x2 will be 0. Then u will be 2 into 20 square. And if it's on the y-axis, then x1 is 0 and x2 is 20. Then u is equal to 20 square. This is greater. So the equilibrium is where we have 20, 0. अब इसको लेके आप प्लॉट कर लो. You see, आपको पता था कि कौन सा कर्व है. It took you hardly 2 minutes to solve the question. So this is how it happens. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उसका कर्व कौन सा है. The moment you are sure about कि फंक्शन का कर्व कौन सा है, then it's easy. Then you just have to apply the equilibrium condition and you're done. But the challenge is, or the trick is, to get to the right equilibrium condition, which with practice you will get to the right one. Okay, in the next video I will do the discrete goods. Thank you.